have been doing this Inspire series on behalf of Kalpataru, and it's usually on every Wednesday, but this is going to be a very special series that's on Saturday today, because it's a very special artist that we have today. So for a special artist, there has to be a special day. Yeah. Thank you, Kavita, for letting me know, and our guest has also joined, so I'm just waiting for few of our more guests to join in, and then I will definitely call our guest. And a little bit about our guest today, and you all know, she's Nirali Kartik, and what a wonderful and amazing artist she is. And it is our privilege and delight that she is going to join us in some time. She has a mellifluous voice, and I have been witness to her music many a times, though not physically, which I'm waiting to very soon. But being a Kathak dancer, we always are at the lookout of wonderful voices on whom we can do a bit of abhinay. So that is how I got to know about Nirali ji, and she's doing wonderful job. She's so well known, and thank you so much for joining in, everyone. I think now you all are waiting for our guest to join in. So without much delay, we had a little bit of delay already because of some technical glitches, but now I won't keep you waiting anymore. So let me invite my guest right away. Hello, Sangita ji. Namaste, Nirali ji. Hello, how are you? Thank you so much for joining in. Nirali ji, I'm not able to hear you. I just lost you. Is this better? Yeah, yes. Now I can hear you. Yeah. If So first of all, yeah, I'll wear my headphone and yes. But I'm able to hear you now perfectly. Great. So first of all, on behalf of Kalpataru, I welcome you to our Inspire series, and thank you so much for accepting the invite to have an informal chat with me, and I'm really looking forward to it. My pleasure, Sangita ji. We connected last year during the lockdown, and Yes. since then I'm following your wonderful work, especially the education aspect of it that you've been doing so passionately. So it's my pleasure. Oh, Yeah. thank you so much, Nirali ji, for even saying so. Because coming from you, you yourself as a wonderful artist, and what a lovely voice you have. And just every time I listen to it, hear your voice, it just mesmerizes me. And every time I listen to it, I feel like dancing only, doing abhinay or something or the other. So it's great to connect over here. And Nirali, as you know, that this is a series about where the entire intention is to inspire the aspiring artists or aspiring students who are, wanting to take it up as a profession. So I thought, what better way to, bring in artists like you who have made their way till here to share your journey with them. So to start with, Nirali ji, if you could share your initial journey and how you took up to Indian classical music, if you could share with us. Absolutely. So, Sangita ji, I think my voice is not properly audible to some of our audience. So, Yeah, give 1 minute. I will wear my yeah. headset. I'll just, is it possible to disconnect for a minute from here? Okay, sure. So everyone, please be there, and Nirali ji is going to just join us. Yeah, sure, Nirali ji, you can. So please be there with us, and she's going to join right away. And till then,
you all must be aware of Niraliji's wonderful work, and also Kalpataru's, that is my organization, and most of you know that I'm a Kathak artist, and Kalpataru is an initiative by myself, and it does trains younger generation of artists. Apart from that, we keep on doing many events which involve promoting and uplifting our cultural heritage. And amongst that is this Inspire series, where we invite our artists to inspire the generation next, and to, in a way, let them know that it is not going to be easy if you have taken it as a profession, but it certainly is going to be very rewarding, even if it is not easy. So that is the intention that I started this series. Okay, thank you, ma'am, for keeping our cultural heritage. It's thanks to the wonderful team I have, the wonderful students I have, that I'm able to do this. And if you all have time, you could go through our work in YouTube, and other than that, in my page also, you will be able to see. And first of all, I would really like to thank all of you who have joined and being so patient. So just wait for another 1 minute. Our guest is going to join back. And till then, if you have any questions, if you would like to ask me or Niraliji, you could just post it out there, so that this is a good time to see any questions out there. Once we start communicating, it becomes a little difficult. Thank you, Palak, for joining in. Okay, Mr. Indian Citizen is saying, ma'am, I can't dance, but I'm also an artist. Of course, poet. Oh, wonderful. I love poetry, and I have danced many a times on poetry. So that is my second love, I would say. So that's a great. Okay, I think I have to send Nirali ji again an invite. Let me just wait on, and I'm sending an invite. Yeah, I have sent Nirali ji an invite, so she's going to join in a while. Thank you, Monica Gupta, for joining. Thank you, Kathak Chakkar, for joining. Would love to know your real name also. Oh. Thanks, Lisa. Thanks, Kanishka, for joining in. Gautam Gaur, thank you. Thank you for joining in. Nirali ji, are you there? Thank you, Shatarupa. Hi, Vidisha. Hi, how are you? Good to see you here. Be with us. I'm just waiting for my guest to take this conversation forward. I have sent her a request, but it seems, what is happening? Just a second. Nirali ji, are you able to get my invite?
Alicia, today's guest is Nirali Kartik. She is a wonderful vocalist, Indian classical vocalist. And yeah, Yes. here she is. Okay, so she's Okay, there. Sangita ji. Now, Yeah, you're perfectly fine. We can hear you so well. yes. Right. Somebody is saying a bit louder. I don't know. Now, can you try again, Nirali? Check. Is this okay? Yeah, I think I'm able to hear it quite clearly. I think our guests, our viewers can also hear. Can somebody Okay. let us know that if you can hear Nirali perfectly fine? Yes. So I think it should be okay Yeah, because yeah, yeah. You are I getting changed the messages. room Yeah. and I'm in a better network. I think I'll just need a little bit of light over here. That's it. Needed. Yes, Yeah. Sangita ji. So Yeah. thank you so much. Okay. I think so. This is okay, right? So continuing There with is our some conversation. the headphone is making a little bit chir chir wala awaaz. Chirchir wala awaaz. Okay. Okay, let it Right. be. हाँ, Let it be. होता रहता है. Yeah. हाँ, Yeah. होता रहता Yes. है. Yeah, Yes. So continuing from where we had stopped, yeah, about the right. initial journey. So I come from a music loving family, and my mom has been a lover of music, and it was her dream that I become a classical musician. Like she had decided, classical singer. And Wow. luckily, my dream and her dream matched. It was not that I was forced into it. I found my heart and soul dancing into our music, and I think it was serendipity that my mom dreamt of me being a classical singer, and I started to love classical music. And then, of course, it was a very personal journey of finding myself, finding the right guru, finding so many things that we as an artist go through. Yeah. Absolutely. All falls into place the moment you decide that you want to be, Yes, that's true. That's true. The universe starts conspiring, isn't it? Yes, absolutely. Yeah. So wonderful. So, Nirali, that you said that must have started very early, right? Yes. When you started music, what Yes. was the age like? You started. So I started to take formal training since I was about 9-10 years of age. And my mom put me in a school called Saptak School of Music. And it is one of the foremost music schools in Ahmedabad. And they actually started the whole classical music culture. Saptak School, the trustees of Saptak School. Right now it's headed by Srimati Manjuben Mehta. At that time it was her husband and a few other people, Rupa Ben. They all started this culture of classical music when, classical music was not a thing for Gujaratis at all. Because as you know, Bengalis, Maharashtrians, South, and even like, North, classical music कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में होता है. Gujaratis are more fun-loving. There is a lot of karba. There is a lot of food. There is a lot of drama also, theater also, but not classical music. So at that time, Saptak School of Music started this whole culture, and I was lucky that my mom put me there, and I found my first guru there, Shri Vikasbhai Parikh, and he was the one who instilled in me the passion of classical music actually. So it was very strict, but in the beginning he made sure that we fall in love with classical music. So he made it very interesting. And he noticed and told my mom always that, I have this thing in me. I can do really well in music if I do it properly. Yeah. Wonderful, wonderful. So, Nirali ji, now that you have taken it as a profession and you are so well known and you are doing so well, and especially you are inspiring so many youth through your music. So, I would like to know that being a classical artist, classical vocalist, how do you think that, our generation, generation next can get inspired, because there is a lot of exposure to lot many things, and
and this is a time when youth, especially, is a time when you want to explore lot many things. Correct. So, being in that position, how in your youth, you are still youth, I'm also youth, yeah. Anyways, in that way, how do you think that we can really grab the attention of youth towards classical music and towards, something which is very surreal, it's very different experience that we have in classical music. So, what do you have to say about that? Right. So I think we as a country or people in totality, we have to understand where we as humans are going towards. So if you see the kids of today, we like the kids now, they are hooked onto technology. They are, even the studies now is happening through computers. And of course, all the other activities, the fun activities. There is TV, there is Netflix, and there are so many games and Everything. PlayStation. So from the moment you get up till you sleep, a kid right now is in front of technology, and I think it's scary. So I think it is a challenge for parents to actually understand the hazards of this. And of course, it's a great thing if it's used in moderation and if it's used correctly. But to take away a child's attention from lots of technology that they are surrounded by, they have to they should be given something that is engaging, that challenges their mind, and that also fills their soul. So I think so important. Right, we are just thinking about a child's mind right now, that my child is becoming smarter, my child is studying, all of these things, but where is the soul? Where is the soul? Absolutely. So soul only, and if you want to nurture a child's soul, arts is the only option. Performing arts especially, because उसमें आपका तन मन सब ऐसे इन्वॉल्व होता है कि और कोई चीज में नहीं हो सकता. सो एक तो ये चीज है, एक तो ये चीज है कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ तक हमें टेक्नोलॉजी को हमारी लाइफ में आने देना है, और दूसरा कि it has to compete. We are right now competing with all the other performing arts, like as I said, the web series, and there are so many other things which are so glamorous. और अपना classical थोड़ा शांत है, उसका temperament थोड़ा शांति है, थोड़ा non-glamorous है. तो how can we make it more attractive that the youth of today would feel कि हाँ मुझे this is not outdated, this is not something कि मैं कहूँगी तो I'll become uncool. I was very surprised to know that a lot of children don't tell their peers that they learn classical music just because they think they'll be called uncool, which I think must be changed. Same happens with So how can we make classical music cool? So उसमें हम माटी बानी में थोड़ी कोशिश करते हैं कि, और वो कोशिश काफी हद तक कामयाब भी होती है कि बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे साथ फिर जुड़ते हैं और उसकी वजह से फिर मेरा क्लासिकल भी सुन लेते हैं. So True. So, tell us something a little bit more about Mati Bani, because how you have, I can gauge that this was the intention, that you wanted to bring the young crowd, listen to the classical music and orient them towards that through, a bit of fusion or a bit of light classical, and then. No, that's a wonderful idea. But so what all you have done through that, if you could share a little bit. हाँ, तो जब हमने शुरू किया माटी बानी तो मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि आई कम फ्रॉम अ प्योरिस्ट एंड एन ऑर्थोडॉक्स क्लासिकल म्यूजिक बैकग्राउंड. लोग क्या कहेंगे वाला जो सवाल आ जाता है कि अरे लोग क्या कहेंगे, मैं तो क्लासिकल म्यूजिक गाती हूँ, मैं बैठ के क्लासिकल राग्स करती हूँ, और आई एम अ वेरी सीरियस म्यूजिशियन. I am going to make a name for myself in classical music. अगर मैं fusion करूँगी, then people won't take me seriously. So this was one of my worries, and I was scared actually. तो मैं बहुत inhibitions के साथ मैंने शुरू किया था, but whenever I used to sing, I used to have a lot of fun. And one big thing, one big aspect of my life is having Kartik besides me. And Kartik is a music composer and music producer himself. So मैंने सोचा कि अच्छा अभी ये तो है, साथ में है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है.
या तो मैं कुछ साथ में करूं या तो फिर मैं अपना सिर्फ क्लासिकल करती रहूं एंड आई एम हैप्पी इन दैट. आई थिंक happy with both the ideas, but then I felt that I would be missing out something very special if I and Kartik don't collaborate, being in the same house, being husband and wife. Why shouldn't Yeah. we? Why am I so scared? So धीरे Yeah. धीरे करके वो डर मैंने निकाला. और फिर अगर आपने देखा होगा मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, हमने एक सॉन्ग किया था, इसमें I totally changed my look. I was like heck with that, you know, कि क्या लोग सोचेंगे. I just don't. This is me. So why am I worried about what people will think? तो उसमें मैंने एकदम हार्डकोर रॉक लुक दे दिया अपने आप को, and I just let my soul, you know, completely free of any inhibitions. Inhibitions, yeah. Yes. और उसके बाद हमने बहुत ज्यादा कोलैबोरेशंस करने शुरू कर दिए और मजेदार. एंड जबकि मुझे कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि अरे ये तो फ्यूजन भी करती है, यू नो, बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग फॉर श्योर बिकॉज पीपल आर अंडरस्टैंडिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. एंड इफ वी डोंट मेक दिस होल क्लासिकल थिंग, यू नो, फन एंड एंगेजिंग, तो फिर ये कौन सुनेगा. ये अगर हम थिंक ऑफ द पास्ट, वही चीज हम जो सेंचुरी से करते आ रहे हैं वही करते आ रहे हैं, तो फिर आज की जो ऑडियंस है वो कैसे कनेक्ट कर पाएगी, जबकि वो सब एक साथ में दिखती है, जबकि उनके पास सब है सामने. वंडरफुल. एंड मैं ये समझ सकती हूँ कि किस तरह से फिर यू नो, जैसे कि पानी की धारा है, उसको एक जगह मिलना ही है जाके, तो समुद्र में तो सब जाएंगे ही, तो उसको थोड़ा सा घुमाते हुए अगर ले जाएं, और ultimately we want to take them to the samudra only, because Indian classical music is nothing less than that. Yes. And but the initial orientation becomes little difficult. तो वो अगर थोड़ा हाथ पकड़ के हम समुद्र तक ले जाएं तो वो एक अलग बात हो जाती है. तो आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट निराली जी, कि आपने ये हाथ पकड़ने वाली बात कही और करी भी, और इतने ब्यूटिफुली यू हैव डन इट. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक slowly are you there? Yeah. Yes. Slowly, people are able to appreciate, because what I also feel that the Indian cultural heritage is so rich, whether it is performing classical music or dance. You know, we are so variedly enriched in our own cultural heritage. The only thing is that we have to give the right exposure. We have to bring in the people to the right kind of a foray so that they can see what is available, right? Absolutely. और मैं तो कहूँगी कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इतना एडिक्टिव है. तो मेरी मम्मी ज्वाइन हुई है. मम्मा नमस्ते. नमस्ते आंटी. नमस्ते. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. मेरी मम्मी तो इनफैक्ट ये भी चाहती थी कि मैं थोड़े सॉन्ग्स गाती रहूं और थोड़े फिल्म सॉन्ग्स गाऊं, पर मेरा टेम्परामेंट कोई था ही नहीं. और मैं बचपन से ही मेरा वो, अरे ये कौन सी अलंकार है, ये अलंकार में बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा ये राग, ये बंदिश. मी एंड माय ब्रदर ऑलवेज यूज्ड टू लिसन टू क्लासिकल स्टफ. और मेरी मम्मी हमेशा फिल्मी गाने सुनती थी और गाती थी. तो मेरा तो बचपन से, मतलब आई वाज एडिक्टेड टू इट सिंस चाइल्डहुड, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बी अवे फ्रॉम क्लासिकल म्यूजिक एंड डू समथिंग एल्स. तो मैंने जहां तक एक्सपीरियंस किया है अपने क्लासिकल म्यूजिक के लिए, कि वो जैसे आपने कहा कि समुद्र तो है ही, पर समुद्र में जो कहते हैं कि डूब के जो यू नो जो बाहर निकल जाता है, वो बहुत ही मजेदार चीज है और आपके सोल को रस से भर देती है. मुझे नहीं लगता, मैंने नाटी बानी में हमने करीब 250 आर्टिस्ट से ज्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने आर्टिस्ट के ज्यादा साथ कोलैबोरेट किया है. और मैंने हर तरह का म्यूजिक जानने की, समझने की, एंजॉय करने की, मतलब आई हैव एंजॉयड दैट. बट एट द एंड ऑफ द डे आई नीड क्लासिकल म्यूजिक. इट फील्स लाइक, यू नो, हाँ अभी हम अपने घर में आ गए. So wonderful, so wonderful. और वही आप जो अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हैं कि ये जो एक अंदर डूबने वाली बात है, तो somewhere there is this zone of, you know, experiencing everything, and then ultimately you have to experience something which is within you, right? कि वो कहाँ ढूंढते फिरे, वो मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे. बिल्कुल.
मैं तो तेरे पास हूँ। वही, मैं तो तेरे पास में, वही बात हो गई कि हम हर जगह ढूंढते हैं लेकिन अपने अंदर तो ढूंढते ही नहीं है जो बिल्कुल कि अंदर बसा हुआ है। बिल्कुल। वंडरफुल। तो निराली जी, आप थोड़ा ये बताएं कि आज के जो क्लासिकल म्यूजिक सीखने वाले बच्चे हैं, और आपके हम्म पास भी सीख ही रहे होंगे बच्चे, हम्म तो आपको क्या लगता है कि उनको किस तरह से आप ग्रूम करती हैं? और इट्स नॉट ओनली अबाउट स्किल्स, आई वुड से कि स्किल्स तो एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग होता है, बट क्लासिकल म्यूजिक एंड एज वी ऑल नो इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ ग्रूमिंग। हाँ, हमारा जो गुरु करेक्ट। शिष्य परंपरा है, या हम कहते हैं कि जैसे मैं भी अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि इट्स नॉट एनफ व्हेन यू कम टू क्लास, यू नो, इट इज नॉट जस्ट skill that you are learning. It's a philosophy that you are learning, right? And for एब्सोल्युटली that you have to get more involved. तो राइट। आप किस तरह से ग्रूमिंग करती हैं, और आपको क्या लगता है कि किस तरह से होना चाहिए? बिल्कुल। सो दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि माय गुरु राइट नाउ पंडित संजीव अभ्यंकर Yes. जी, जी I जी। have been blessed to be under his guidance, and it was my dream to learn from him since I shifted in Mumbai around मुंबई। 2009. Yes. सो उनके पास सीखना मेरा ड्रीम था, और उनके पीछे मैं पड़ गई थी कि आपके पास से सीखना है, पर तभी वो सिखाते नहीं थे। सो आई हैड टू वेट फॉर अ हम्म वेरी वेरी लॉन्ग टाइम टिल ही हम्म स्टार्टेड टू टीच। तो अराउंड 2017 अर्ली में मैं उनके पास सीखना शुरू किया, और for 3 years it was like intensive training. It was beautiful. I was like living my dream. और फिर 3 साल, जबकि मैं ऑलरेडी प्रोफेशनल परफॉर्म करने लगी ऑफ कोर्स। थी बहुत ज्यादा, और हम्म फिर मेरे गुरु सर पंडित संजीव अभ्यंकर जी के पास गई। आफ्टर 3.5 years ऑफ इंटेंसिव ट्रेनिंग, लाइक बहुत ज्यादा उन्होंने ज्ञान हम्म दिया, और अभी भी चालू है। उन्होंने हम्म इंसिस्ट किया कि सिखाना चाहिए, सबको सिखाना चाहिए। हम्म आफ्टर अ पॉइंट, आफ्टर अ हम्म पॉइंट ऑफ हम्म अर्निंग यू हैव टू टीच। तो मेरा हम्म। रेजिस्टेंस था काफी समय तक, और मैं बोली कि नहीं, अभी तो नहीं हो पाएगा सिखाऊंगी। मुझसे। हाँ, तो हाँ। बहुत समय तक वो चला कि अभी नहीं, कभी हो जाएगा। हम्म। आई न्यू दैट आई विल टीच, बट आई नेवर न्यू कि कब। कि इतनी जल्दी। बट हाँ, या। तो लॉकडाउन एक्चुअली गिव मी टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन माय गुरुज हम्म वर्ड्स, एंड व्हेन ही टोल्ड अगेन कि सिखाना चाहिए, तो मैंने सिंसियरली उनको सुना, और मैंने फिर सिखाना शुरू किया। सो इट्स बीन अबाउट 7-8 months that I am teaching, हम्म and I am हम्म। surprised to know that I'm a good teacher. I think so. क्योंकि मुझे मुझे अगर मजा आता है तो आई नो दैट आई एम डूइंग माय जॉब वेल। अगर मुझे मजा हम्म नहीं आएगा, देन आई नो दैट नो, इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। बट आई नाउ हम्म रियली लुक फॉरवर्ड टू दीज टीचिंग सेशंस, और हम्म आई मेक श्योर दैट फर्स्ट द स्टूडेंट्स first understand, no, not understand, but enjoy the whole process of प्रोसेस ऑफ learning. लर्निंग। हाँ, या। तो एक साथ में मैं उनको कहती नहीं हूँ कि आप फटाफट ये मेरे को रियाज करो और करके दे दो, नहीं। आई हम्म मेक श्योर दैट फर्स्ट इफ इट्स बिहार, तो मैं उनको हम्म बताऊंगी कि बिहार के न्यूआंसेस क्या है, व्हाई इट्स सो ब्यूटीफुल, उसकी ब्यूटी कहाँ कहाँ छुपी हुई है। तो उसके जो सारे अच्छे एस्पेक्ट्स हैं उनके सामने रखने की कोशिश करती हूँ। I make sure that they हम्म enjoy that whole 1.5 hour of session, and then they हम्म। should feel compelled to practice on it. यस। That is व्हाट अ how, हाँ। yeah, हम्म। उनको लगना चाहिए कि नहीं नहीं, ये अगर मैं नहीं करूंगी तो I'll miss something during my day, you know. Right, So absolutely. yeah, This is a and great thing that you have said, that they should be compelled to do the riyaz. correct, yeah. देखो, यही तो रोल है एक टीचर का, या जो भी है। इट्स नॉट ओनली स्किल, बट हाउ यू कैन मोटिवेट कि वो Yes, खुद ही अपने आप को, मतलब अपने आप से रियाज करें। बिल्कुल, yes. ब्यूटीफुल। निराली जी, अब रियाज की बात हो ही रही है, तो आप अपने रियाज के बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह से आप शेड्यूल करती हैं। आप बहुत व्यस्त रहती हैं, और यू आर इनटू आल्सो, योर डेज गोज इनटू शूटिंग आल्सो। तो आप किस तरह से मैनेज करती हैं अपने रियाज को? बिल्कुल। सो रियाज के काफी अलग अलग फेजेस होते हैं, जो आप भी अग्री करेंगे कि जब भी हम बचपन में होते हैं तो उसका रियाज अलग होता है,
वंस वी नो अ लिटिल मोर म्यूजिक तो उसका रियाज फिर काफी इंटेंस होता है। फिर एक आता है वो सुनने का रियाज होता है कि आप अच्छे बिल्कुल से बिल्कुल। सुनो, बहुत अंदर लो अपने आप में संगीत की, लाइक पीना है एक पॉइंट पे। क्या एक बात। पॉइंट पे ऐसा जो आई थिंक वो मेरा है कि अभी मैं मेरे गुरु के पास जाती हूँ आज भी, और जो वो सिखाते हैं आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्वे, और क्या क्या वो कहना चाह रहे हैं अपनी, वो बहुत सटल चीजें होती हैं, वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल। वो राग को कैसे देखते हैं, वो राग को कैसे समझते हैं। बिहाग हमने किया, मारू बिहाग किया, अच्छा मारवा किया है हमने, भैरव किया, नट भैरव किया, अच्छा ये सारे राग हमने कर लिए, अच्छे से कर लिए, आई कैन परफॉर्म। बट एट दिस स्टेज व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्वे थ्रू अ राग, दैट इज माय रियाज राइट नाउ। और कोई भी मैं वंडरफुल आर्टिस्ट को सुनती हूँ तो उनका नजरिया क्या है वो राग देखने का, और जबकि आप बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट को सुनोगे, हर एक आर्टिस्ट का नजरिया अलग होगा, उसका एग्जीक्यूशन अलग होगा। सो आई वुड ट्राई बिल्कुल। कि हाँ इनके एग्जीक्यूशन में क्या खासियत है, इफ आई कैन इम्प्लीमेंट, आई कैन ग्रैब इट इन माई सिंगिंग, और अगर करना है तो फिर उसके ऊपर रियाज करना है। बहुत खूबसूरत ये आपने जो बात कही है। हाँ प्लीज कंटिन्यू। Yes, and about the schedule, I make sure that I do my morning riyaz. वो तो बहुत ही जरूरी है, and I start my day with good exercise and good riyaz, जो स्वर साधना होती है वो। फिर वापस about 9:30 to 12 I just listen, sing, make my notes, कुछ रीड करना है कोई राग के बारे में वो कर लेती हूँ। फिर थोड़ा सा ब्रेक होता है, फिर अगेन 3 to 4:30, 3 to 5 का समय जो होता है उसमें वापस यही कुछ करती हूँ, रियाज करती हूँ, सुनती हूँ, समझती हूँ। माय आइडिया इज टू डाइजेस्ट अ सर्टेन थिंग दैट आई एम थिंकिंग, यू नो, कि एक अगर मुझे एक न्यूआंस लेना है तो वो मेरे म्यूजिक में मैं कैसे डाल सकती हूँ उस समय में। So that is what I try to do. Yes, and I have a lot of, I don't think a lot about what people are going to say, because मेरा रूट काफी अलग रहा है, मेरी आवाज पहले से ही अलग थी. It was not a typical singing voice. It was a very different voice. So I heard a lot of फीडबैक, यू नो, कैसी आवाज है, कभी कोई बोलते थे बहुत अच्छी आवाज है, कभी कोई बोलते थे कैसी आवाज है। सो आई लर्नड इन द वेरी बिगिनिंग कि ये सब तो चलता रहता है, फ्रॉम मी व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ माय सेल्फ। निराली जी कुछ व्यूअर्स बोल रहे हैं कि शायद वो थोड़ा सा ठीक कर पाए अगर आप। ओके, इज दिस बेटर? बस थोड़ा सा आवाज आ रहा है। इज दिस ओके? आई थिंक इट शुड बी ओके। हाँ आप यस यस। तो या तो let's take it forward. I think अपने ये जो हम टाइम में रह रहे हैं, we are looking for external validation all the time, but luckily for me, जो मेरी जिस तरह से मेरी तालीम मतलब और मेरा गाना था, it was मैं सबका सुनती थी पर निकलता था हमेशा मेरा ही। It was not like I tried to be very different from what I was being taught, but ऐसे ही naturally था। So I was like, you know, ये थोड़ा अलग ही है, और हर तरह के फीडबैक कभी मुझे मिलते थे। So now I have kind of, you know, I take everything in my stride, and I only focus on my own expectations of me. I think that as an artist is so important that we just don't, of course, audience is very important, critiques are very important, but at the end of the day, मैं खुश हूँ कि नहीं मेरे गाने से, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर योर फर्स्ट क्रिटिक, नो। आप अपने आप को सबसे पहले, आपकी श्रुति जो है वो आपके कान में जा रही है, और इफ यू आर अ डांसर, like for myself, I would see first thing in my mirror that how does it look to me, you know. So this is so wonderful कि हम सबकी बातें सुने लेकिन करें एटलीस्ट जो हमारे मन को मतलब खुशी पहुंचाए, एंड इट इज अ सोलफुल टू अस। बिल्कुल जी। तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं हमारे साथ, सो आई जस्ट वुड लाइक टू टेक 1 minute टू
thank everyone for being there. Thank you so much. And if you have any questions, please, that's a great opportunity. And I can see there are young musicians, young singers who have joined. So please, if you have any questions, it's a great opportunity. Nirali ji is right there, and she would be able to answer your questions. So till then, we are carrying it forward. Nirali ji, taking it further, I would now like to ask you that. You have done a lot of collaborations and you have worked with world musicians as well. तो आप किस तरह से उसको उसका समन्वय आप कैसे ढूंढती हैं? How what kind of a synergy that you get when you work with different musicians? बहुत ही it's a very fun process because I'm a hardcore culture person. If you tell me कि ये कंट्री में जाके आप पेरिस में जाके एफिल टावर देखो तो it won't excite me. What will excite me more is to explore the culture of that city, to explore the people of that city, food. तो मुझे लगता है कि एक कंट्री को जानने के लिए अगर हम उसका म्यूजिक अच्छे से जाने तो हमें कंट्री की पूरी छवि सामने आ जाती है. So that's kind of, it gives me a lot of, it gives me a sense of fulfillment because it's also one of my hobbies, कि अलग-अलग countries के cultures को जानना. तो अरे ये तो आपके साथ बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि which is absolutely this, same hobby that I have and I love to explore, तो बहुत अच्छी जमेगी. चलिए. We have to. So recently हमने ये किया कि एक जो भी गाना आ रहा है माटी बानी में, it's a कन्नड़ा folk song और उसके साथ हमने mariachi band लिया है which is the folk music of Mexico. So wow, wonderful. और बहुत ही सही combination हुआ है. जबकि आप देखेंगे then you'll know that it's sounding fantastic when Kannada right folk, now it is sounding very exciting. Yeah. So thereafter, I read a little more about mariachi music, where it is played, और ये जान के बहुत ताज्जुब हुआ मुझे कि उसमें सिर्फ हैप्पी सॉन्ग्स बजते हैं, उसमें कोई सैड वाले सॉन्ग्स ही नहीं होते. अरे वाह. Then you very uplifting. Okay, so these would be the kind of people, they are very fun-loving people. So that is what when you hear music of a country, you get to know a lot about the people of that country. So I like this whole idea of collaborating with artists from different countries. Wonderful, and that's what I was listening to you, and I was thinking that it is so common that whenever we also go to different country and perform. I remember once I performed on Spanish poetry when I went to, I think, Colombia or somewhere, and it was so the instantly the audience get connected to it because they understand the language. Yes. And we felt like as if we are doing something in the Kathak format only. सिर्फ language ही तो बदला है. Wow. तो बहुत ही मजेदार ये हमारा. I always feel that we are so blessed that we are into this profession. Yes. We get to know so many people who are so wonderful artists, and then we are able to interact and create some artwork out of it. So it is so exciting. Absolutely. Or to just say a little more on what you are saying, that कोई भी art है, whatever art that you take, whether it's Kathak or I'm talking about classical arts mainly. Yeah. It kind of gives such a beautiful perspective. It fills our lives. I think for me, I have personally experienced it, and hence I can say with conviction that because of that, I enjoy flowers more. Because of our music, हम बहार राग गाते हैं, हम सोहनी गाते हैं, ललित गाते हैं, उसमें कहीं ना फूलों की महक छिपी हुई है. Then when you see a flower, तो मुझे वो flower भी fully, I want to just take in the fragrance of that flower fully. When I look at a hill, I want to just see that hill for some time. वही है हमारा राग. हम वो राग में पूरा एकदम एक होने की कोशिश करते हैं. So I think classical music has this power to bring you in that moment because it's all in that zone. Yeah.
हम कितना स्पॉन्टेनियसली हम गाना गाते हैं या आप कथक करती हैं, सब बिल्कुल कितना स्पॉन्टेनियस है। तो जब तक आप वो मोमेंट में नहीं होंगी फुल्ली, व्हेन योर अवेयरनेस, व्हेन यू आर फुल्ली प्रेजेंट, ओनली देन यू कैन परफॉर्म द म्यूजिक। अदरवाइज अगर आपने रटा हुआ है, याद किया हुआ है, तो फिर क्या ही हुआ, देन यू कैन थिंक ऑफ अदर थिंग एंड ऑल्सो परफॉर्म। But when you are एब्सोल्युटली doing it spontaneously, when you are creating that thing at that very moment, एट then द you have मोमेंट to be that moment itself. So I think एब्सोल्युटली that's what this art has given to me. It gave me this moment, when I'm talking to you, and I'm just like, I don't know what's happening. So I यस think यस यस that's so beautiful. That's so beautiful, and that's so amazing to see that how even in the pandemic, Nirali ji, that we know that it has been so harsh, and especially for performing artists, it has been really harsh because we have been taken away from our audience. That is Yeah. our first, a first reference. We need our audience to perform, right? Yes. And we have been taken away from that. So it has been a harsh period. But I would again come back to your point, what you are saying, that we live in moment. Yes. We know how to live in the moment. So that's why we all sail through. Um, Yes. I won't say that there are many artists who have, who have gone without having a meal a day. And it has been really disheartening to see what has gone through. But having said so, artists have something which keeps them going. Even if they don't eat a meal, they would still be able to enjoy something because it is something there within them. They don't have Ye- to look for it somewhere else. So that's Yes. the beauty of performing arts. That's the beauty of classical music and dance. Absolutely agreed. Yes. Yeah. So there was a viewer, I lost him, but he asked you that what is your favorite bandish? So would you like to थोड़ा गुनगुनाएं कि आपका बिल्कुल, बिल्कुल। सो रिसेंटली अभी छेड़ो ना कान आया है, छेड़ो ना कान, तो वो मैं थोड़ा आपको सुनाती हूँ। जी बिल्कुल वो मेरे गुरु पंडित संजीव अभ्यंकर जी की बंदिश है, और उनकी सारी बंदिशें मुझे बेहद पसंद है, और रिसेंटली जो अभी रिकॉर्ड की है वो मैं आपको सुनाती जी जी कौन सी राग में है हूँ। राग आसा मान। हाँ वंडरफुल छेड़ो ना कान मोरे। आप अभिनय कीजिए ना। अरे शब्द है, शब्द बिल्कुल है। चलिए हाँ, छेड़ो ना कान मोरी, हम्म बैया गहो ना, हम्म क्यों तुम मोरी बैया हम्म, गहत हो। क्या बात तो वृंदावन की कुंज गलीन में जी 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 रीत छोड़ अनरीत करो ना। हाँ क्या बात तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, हमारा म्यूजिक कितना स्पॉन्टेनियस है, अभी हमारे ऑडियंस को एक थोड़ा एक लाइव झलक एग्जांपल मिल जाएगा कि how बिल्कुल we stay in the moment, how classical music fills our lives with beauty and या so much of grace. You are grace, you are, आपके हर कण में grace है. So अरे नहीं 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 yes, thank you so much for being thank so you, generous thank but you. having said so let me fix it in a way so that our audience can बिल्कुल, see me बिल्कुल, बिल्कुल. So some of my friends have joined. Hi Christian, hi Sharon. Hello we Vaishnavi. really wanted to make it very um, informal so it's okay that I'm pushing my chairs away You are looking absolutely gorgeous. thank you चलिए चलिए, पिंकी जी आई है और सबको धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। तो अभी हम thank you for संगीता joining जी अभिनय कर रही है लाइव, और मैं गाना गा रही हूँ।
दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन, और मैं हमेशा, मुझे ताज्जुब होता है ये समझ के कि दो आर्टिस्ट अगर मिल जाए तो फर्स्ट डे से बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं। बिल्कुल, ये तो मतलब आर्ट जो है वो इस तरह से जोड़ता है कि फेविकॉल ना जोड़ पाए। बिल्कुल, तो शुरू करें। जी 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 बिल्कुल। छेड़ो ना कान मोरी बैया गहो ना, छेड़ो ना कान मोरी बैया गहो ना, छेड़ो ना कान मोरी बैया गहो ना, क्यों तुम मोरी बैया गहत हो, क्यों तुम मोरी बैया कहत हो, नयन ज्वार मेरे प्राण हरो ना, नयन ज्वार मेरे प्राण हरो ना, छेड़ो ना कान मोरी मैया गो ना, वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गली में, रीत छोड़ अनरीत करो ना, रीत छोड़ अनरीत करो ना, छेड़ो ना कान मोरी, छेड़ो ना कान मोरी, छेड़ो ना। वाह, क्या बात है। अरे थैंक यू, वाह क्या बात है। और बिल्कुल मजा ही आ गया और So पता beautiful, ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। जब आपकी आवाज होती है तो अपने आप निकलते हैं, मतलब अभिनय तो अपने आप ही होता है। इट्स थैंक यू लाइक संगीता जी, naturally यू आर flowing with your सो, wonderful voice. थैंक यू। I think our audience could see, and there are many comments which are coming. It was absolutely beautiful words, beautiful. Many comments are coming. So यस, uh, Nirali ji has already said that हम लोग पहली बार मिले हैं आज, और पहली बार ये बंदिश भी मैंने सुनी है. But ये having मैं said हमेशा that, ये सवाल हम्म, पूछती हूँ कि दो हम्म, इंजीनियर्स या दो जी. डॉक्टर्स या फिर दो टीचर्स, हाँ कॉमन चीजें मिल जाएगी, बट क्या कुछ साथ में काम कर सकते हैं ऑन द फर्स्ट मीटिंग? आई डाउट। When I doubt, they will need a lot of planning, and यस, for that matter, ठीक है, we can also come up with planning, but we can also come up without planning. So the यस, point is, we are capable of doing both, एब्सोल्युटली। and that is the beauty of it. तो जो आप spontaneity की बात कर रही थी, that is the beauty, and वो goes into the training. That's what I यस, always say, that the classical, सब लोग पूछते हैं कि इतने साल क्यों लगते हैं, मतलब बिल्कुल, and and today's world is a very 2 minutes noodle वाला world है ना. यस, तो सभी यस, लोगों को लगता है कि बहुत जल्दी वो, मतलब you have बिल्कुल, to be a performer. But करेक्ट, here, I think sure you will agree that the kind of training that we get into, यस, and the years and years of learning, and यस, years of grooming ourselves to hear, listen, see, can यस, only make you an artist. Otherwise, you would be a singer, you would be a dancer. यस। That is a different level. हाँ But to संगीता जी, become an artist, मैं एक
चीज हम्म, कहूँ आपको कि जी अभी जी का जो समय है, आई थिंक लाइफ हैज बिकम मोर स्ट्रेसफुल ओवरऑल। सो एब्सोल्युटली हमेशा कला सिर्फ एक आर्टिस्ट के लिए, मुझे लगता है कि अभी एवेन्यूज थोड़े बढ़ने चाहिए। कि बिल्कुल अगर आपको क्लासिकल म्यूजिक करना है, देन यू कैन ऑल्सो टेक इट अप एज अ हॉबी एंड स्टिल एंजॉय इट अ लॉट। You'll be able to एब्सोल्युटली appreciate classical arts more as an audience। और आपकी लाइफ में जैसे हमने कहा कि ब्यूटी और रस की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आप एब्सोल्युटली एज अ इट्स हॉबी नॉट लेना चाहते नेसेसरी हैं। दैट यू टेक इट एज अ प्रोफेशन, हर कोई इसको प्रोफेशन नहीं ले करेक्ट। सकता है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसके साथ जुड़े रहे तो बिल्कुल। एटलीस्ट आपको अपने ही उसमें बहुत आनंद मिलेगा। इवन इफ यू आर इनटू एनी अदर प्रोफेशन, यू विल यस। स्टिल हैव समथिंग व्हिच यू कैन, आप गुनगुना सकते हैं। व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, यू कैन you just sing few lines, you will feel better. So So how I will give wonderful a you an medicine it is. example. Yeah, I'll give you an example of my brother. So बचपन में हम Hmm. साथ में रियाज करते थे, और मैं मेरे भाई का तबला का रियाज देख देख के आई यूज्ड टू इंस्पायर्ड, he used to practice for a long, like, even I want to practice. Hmm. And I would ask my brother to get up from his place and, practice on the same spot where he was sitting. So ऐसा रियाज उनका हुआ है पहले। और अभी right now he is into the business of restaurants. And now when he comes back from a very stressful day of work, he spends 1 hour with his music, and he Music. is all sorted. All the tiredness of the day goes away, and he's ready for the next day. So I think what Good. music can give you, even as a hobby, is Hmm. so special, and it's a lot. Actually, it cannot be achieved through any TV show or a web show. I don't think so. It kind of Absolutely, fills you again. absolutely. It refills you. It refuels you. Yeah, yeah, absolutely. Because there is, it is like a reservoir. Like you can dig for yourself. हाँ, Yes, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके बिल्कुल। अंदर ही इतना रस भरा हुआ है कि आप कभी भी उसको निकाल के अपना स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम हमने देखा कि पिछले 2 साल से एवरीबडी was coming out with some of or the other of their hidden creativity. Yes, We have seen so many people have turned into painters, into poets, into musicians. कहाँ से निकला? ये बिल्कुल। आपके अंदर ही था ना, ये आप ही के बिल्कुल। अंदर था, So this जो was a आपको नहीं positive पता था। side effect of the pandemic. Absolutely, absolutely. Uh, yeah, there are many comments. If you would like to, बिल्कुल। address to one of them, few of them. If you have any questions for us, you can ask us. हाँ जी। Yeah. So, निराली जी, आप क्या 3 ऐसे शब्द अगर आप कहना चाहें कि to be a professional into performing art, what 3 qualities do you think is required? Yes. If one has to. Now, we have talked about taking it as a hobby, which is, of course, everybody has that, आप सीखें और अपने इस आर्ट को हॉबी की तरह रखें. But the बिल्कुल। one who want to take it as a profession, what do you think that are 3 important requisite things they should have? Absolutely. मेरे हिसाब से the first thing that has helped me the most to be where I am right now, from my personal experience, I could say self-motivation. It's the number Mm-hmm. one thing. आपको कोई कितना कहेगा रियाज करो रियाज करो, आपको खुद अंदर से वो मोटिवेशन निकालना है। अगर बोरिंग भी लगता है तो भी आपको जो करना है, आई यूजुअली मेक अ गोल फॉर माई सेल्फ फॉर द डे कि आज मैं क्या रियाज करूंगी। So Mm-hmm. that kind of helps me keep a tab on, my moods. कि आज मूड नहीं है, पर नहीं, I have decided I have to do this, I have to do this. Simple as that. So self-motivation, very important. A guru that you believe in. बहुत सारे गुरु होंगे जो आपको जो अच्छा गाते हैं, बहुत ग्रेट्स हैं, बट आपको कौन सही लगते हैं? आपको आपके सॉरी, यस यस, हाँ। सो आपके टेम्परामेंट के हिसाब से, आपके गले के हिसाब से, आपको कौन से गुरु, लाइक वो गुरु के साथ आपका एक कनेक्शन, सोल कनेक्शन होना चाहिए। सो अ गुरु विथ whom you connect with soul. And third, what?
these two are very important. And third is, I would say, networking. Because why it is important कि एक तो हमारा ये जो field है वो काफी limited है. It's a small field, not small in the sense कि छोटा है, it's, you don't need to misunderstand or literally take it, but it has limited opportunities. पर आप network करोगे, if you are constantly talking about your music to different groups, then you will be able to लोग मुझे बहुत सारा like pandemic was difficult, but if you are creative, if you have that thing कि you'll be able to see through this time, then you will be able to if you have a good network. So I make sure that I meet people who are not from the music field. I make sure abhi I am fortunate to be a part of this community called In Community. और उसमें you meet people from different fields, from chefs to artists to entrepreneurs to startup people to investors. So these are the kind of people you interact with, and you talk about your music to them and you learn something from them. What happens is that you are creating new avenues for yourself to perform, to teach, to learn, and just to be updated with a lot of other things. So pandemic में हमने बहुत सारे collaborations online किए. We found a sponsor to collaborate to sponsor our series, to sponsor our music series. So so if you are constantly keeping yourself updated through the networks that you have, through the people that you surround yourself with, and through the conversations, I think that contributes greatly to your overall professional aspect. Wonderfully put. So there are three important things that she shared. That is, one is networking. You shared that right guru and self-motivation. Because without that, ultimately, even if you have two of this, if you can't motivate yourself, you won't be really able to put in your best. After a point, you will get saturated. Yes. First, we have to sharpen our skills. We have to be the best versions of ourselves, and then we go out and talk about our art and meet different people. And yes. But one thing I would love to share after speaking to you, that one important thing that humanistically one who should have is the way she's so humble and so no, I really appreciate that. At times it becomes very overwhelming that sooner or later you are taken away, carried away by the kind of attention that you start getting in. But at that point, I'm really telling it to my students who are watching, or all the youngsters maybe, or maybe elders. The first thing I believe that, you have to be humble. A person who is reachable, approachable, humble, who is giving, generous. So all this adds to all that value you want to create. And ultimately, what are we doing? We are trying to create some value in the society we live in with our own, So that is what I really appreciate, and I can see how humble you are. And thank you I so really much. appreciate. But I have to then tell you about a little, maybe briefly, when I was not able to find the right guru. Once I reached Mumbai and I had a wonderful training from my first guru, Shivikas Pari. Then I was looking for, when I was in Bombay, I was looking for the right guru. So us dauran I met my spiritual guru actually. Of course, I had met her before, but the real connection happened during this time when I was searching for a lot of answers for myself. Kaise hoga, kya hoga, kab hoga. And then I had this strong connection with my spiritual guru, who is Mata Amritanandmayi देवी जी, इनको हम अम्मा ही कहते हैं. इनका पूरा नाम शायद आज मैंने पहली बार लिया. So with love we call her Amma, and she is also known as the Hugging Saint. So मैं बहुत उनके पास रही, और she always says this, that as the tree grows, वो झुकता है,
वो बिल्कुल। जितना ही बड़ा होता है वो झुकता है। और एनालॉजी देती है कि एक ग्रास का जो जो तिनका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रास का जो एक या लीफ या होता है, सो या द तिनका। लीफ, द तिनका ऑफ द ग्रास will be unhurt in a storm, while a tree will, you know, अगर उसका वो मैं बहुत बड़ा हूँ या बहुत कुछ कर लिया मैंने तो वो झुक जाएगा। सो हमें ग्रास बन के रहना है, दैट इज व्हाट शी ऑलवेज सेज। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत आपने समझाया। और आई थिंक दैट इज द एसेंस आई कुड मेक आउट, निराली जी, दैट यू आर इनटू, बिकॉज having said so, I am also into a spiritual practice. I think there is Do you something have a which guru? Do you have a I have a spiritual guru? mentor. Yes, I am Okay. into Nichiren Buddhism, and my mentor is Okay. Dr. Daisaku Ikeda. Is Okay. it's Can a I it's an didn't organization. get the name. Okay, okay. Okay. What's the name? It's Dr. Daisaku Ikeda, and Okay. I'm into this practice of Soka Gakkai International. Okay, lovely. Yeah. I So think that's spirituality, लोग बात क्यों hmm, नहीं कर रहे हैं मुझे पता नहीं, but it's such a great anchor in our lives. When we feel absolutely, lost, absolutely. it kind of saves us. And ऐसा तो है नहीं कि आप जितने भी successful हो, you will have your down moments. You will have moments when you are confused. So these are the times spirituality helps us to find an anchor in our lives, and it keeps us safe and secure. Absolutely. And as wonderfully you said कि anchored, क्योंकि बहुत तूफान आएंगी, तूफान तो आती ही रहेंगी और अभी भी आ रही है, लेकिन अगर तूफान में बचना है तो we have to anchor ourselves somewhere, no? Yes, Otherwise हम भी तो उड़ते रहेंगे. उड़ते So रहेंगे। in that ways. अच्छा, आपके किसी फैन ने पूछा है ताज का सॉन्ग, तो हाँ, तो ये मैंने जो रागा है वो ताजमहल में है, बट अच्छा, एक एड सॉन्ग दे आर सेइंग, हाँ ताजमहल एड मतलब सॉन्ग. उसमें सॉन्ग तो नहीं है, मैं तो आलाप ही गाती रहती हूँ। इट्स ऑलवेज ग्रेट टू कोलैबोरेट It's a विद wonderful, तौफीक yeah, जी। Topic ji, acha, acha, acha. Yes. So Wonderful. it's a beautiful process that we have kind of, you know, hit upon. हम वीडियो फिल्म का जो एनिमेशन है देखते हैं, and then we start discussing, you know, which rag will go with this animation, with this kind of a mood, and then we go through a lot of rags, and then we find out a rag that will suit this particular video. So हम आलाप ही ज्यादा करते हैं, तो वो तो मैंने कहा No, दिया, but the video is the one where you are there, na? Or it is like with different artists? हाँ हाँ, अभी for since last 2 years I am very happy to be a part of Taj Mahal ads, and yeah, Yeah, it's great fun. It's great to yeah. work with directors to act for a change. Yes, yes. So I keep on watching you, there's the elegance that you take with the sari and all that. It is Thank you. wonderful to watch. I Yes. have learned it all from all of you, Ah, Kathak dancers. तो फिर आपको हम कथक भी सिखाएंगे साथ में. बिल्कुल. I would love to. It's a dream, but इससे थोड़ा बाहर आए तो ना. It's so बिल्कुल, कितना कुछ so करें. consuming. Yeah, it's a Yes, dream. yes. It's a dream to learn, but अभी तो इतना इसमें हम मस्त रमे हुए हैं कि मस्त. अभी देखते हैं. Obviously. नहीं, मैं आप कुछ सुनाएंगी, आपके फैंस बोल रहे हैं ताज के बारे में. आई एम बिल्कुल. नॉट वेरी ताज श्योर. के हाँ, बारे में तो एक बार अपना हो गया, तो मैं कुछ और सुनाती हूँ. बुंदन बुंदन सुना देती जी हूँ, क्योंकि वो हमेशा जी जी सबको जी. पसंद आता है, and it's one of our top favorite songs. So yes. हम्म. Okay, my friend Sai is online. She's a wonderful actress, and yeah, she's my chuddy buddy. शाकिर जी आए हुए हैं. थैंक यू शाकिर जी, अगर आप देख रहे हैं तो. संगीता जी, एक बार और हो जी. जाए. बूंदन बूंदन मे भी आप सिर्फ मुद्रा कर सकती हैं, if you don't want to do अभिनय, क्योंकि No, इसमें no, no, बहुत no. स्कोप है.
ओके ओके, चलिए जी जी, वो चलिए। से मेहा कजरारी हम्म कारी हम्म। बदरिया, ऐसे नाचे मोरा मनवा, जैसे बन जी में जी, मोर पपीहा। क्या बात है इसमें, तो ये तो नृत्य का ही पूरा सजा हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल। चलिए कोशिश करती हूँ। बूंदन बूंदन बरसे मेघ, बूंदन बूंदन बरसे मेघ, बूंदन बूंदन बरसे मेघ, कजरारे कार बदरिया, कजरारे कार बदरिया, ऐसे नाचे मोरा मनवा, ऐसे नाचे मोरा मनवा, जैसे बन में मोर पपीहा, जैसे बन में मोर पपीहा, बूंदन बूंदन बरसे मेहा। नी सानी नी सानी नी सारे सारे रे 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 वा 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 गा गा मा रे मा बा रे रा रे 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 सारे रे 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 सा गा नी सा गा गा नी नी मा रा रा मा मा नी वा गा गा मा रे सा बूंदन 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 बरसे नेहा। वाह, क्या बात, क्या बात। निराली जी, मिलना पड़ेगा। मिलना पड़ेगा। आपने मोर क्या किया? मैंने कुछ बहुत नहीं किया, सुंदर। आपने करवाया। अरे ये अरे, आपने करवाया, इसीलिए मैंने बोल रही हूँ अब वी हैव टू मीट एंड डू we समथिंग have टुगेदर। to meet. Yes, यस यस यस। चलिए आप दिल्ली आइए और जल्द ही बिल्कुल मिलते हैं और साथ में कुछ करते साथ में कुछ हैं। करते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। एंड ऑल आवर व्यूअर्स, please stay tuned. I think matlab, there is something within me which is telling that we will come up together with something. I feel so. Yes, absolutely, Sangita ji. So thank you so much, Nirali ji. I really मुझे समझ नहीं आया कितनी जल्दी ये टाइम निकला और अभी भी मुझे लग रहा है कि आपको जाने ना दूं, लेकिन Thank आई you. एम श्योर दैट कि रात हो रही है और viewers are still there, and thank you so much viewers, you all have been like you know there उनके throughout. सामने आप जैसी जी, कलाकार हैं, आपके आपके जैसी सुंदरता है और आपके जैसा कुछ ग्रेसफुल है, तो क्यों जाएंगी? अरे अरे ये आप Absolute, it is the absolute other way pleasure to be round. here. Absolute pleasure I, to be I here, mean, Sangita ji. it's what better guest I can have to have in this Inspire series where you could inspire so many people who are watching, and it has been a very special conversation for me because I will always look for people. मुझे वैसे ही लोगों से दोस्ती करना बहुत पसंद है और लोगों से मिलना बहुत पसंद है, लेकिन कुछ लोग बहुत कनेक्ट कर जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि this connect is going to stay forever. So आज ऐसा बिल्कुल। ही कुछ मेरे को आपके साथ लग रहा है, and I'm Thank you, sure that Sangita ji. it I'm is. so happy. Yes. Yeah, so please stay safe, stay well, Nirali ji, and keep inspiring, keep Thank you. spreading the positivity through your wonderful voice, and many best wishes to you. Thank Lots you. of Same love to to you. you. Same to you, Sangita ji. Thank you for having me here. It has been an absolute pleasure to talk to you Wonderful. So, and sing Shubh for you. Ratri. Yeah. So thank you so much, all our viewers again. And um, we have been doing this session since quite a long. So if you would like to continue watching us, this Inspire series, stay connected to Kalpataru. We have been doing many events
apart from Inspire series. So I would be really glad if you follow us and बिल्कुल. follow our work rather. Yes, Arts Kalpataru. Great. Thank you. Shubh Thank you. Ratri. Good Shubh night. Ratri. Good night. Namaste. Bye bye. 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 Bye.